गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राणा। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 16 साल के बाद 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के की कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राणा को इंडिया में एक्स्ट्राडिट कर दिया गया है यूएस द्वारा। अब ये एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और दिखाता है कि सस्टेन डिप्लोमेटिक, लीगल और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको पता होगा कि 26/11 में लगभग 166 लोग मरे थे और 233 इंजर्ड हुए थे। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो एलईटी को बिलोंग करते थे उन्होंने ये अंजाम दिया था और इन्फिल्ट्रेशन हुई थी थ्रू सी राउट फ्रॉम पाकिस्तान। और जो तहव्वुर राणा है, अगर हम देखें तो उसकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी बॉर्न है वो, और फॉर्मर ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कॉर्प्स में। क्लोज एसोसिएट था डेविड कोलमैन हेडली का, जो कि लश्कर तैयबा का स्काउट था। शिकागो में इसे अरेस्ट किया गया था और प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ अटैक्स का जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट ये देता था। तो यूएस मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है इसने अपनी एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ अपील डाली हुई थी और उसको, लेकिन यूएस मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जो है वो रूल किया। इवन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसको रिलीफ देने से मना कर दिया। तो एक्स्ट्राडिशन जो है वो इंडिया और यूएस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से हुआ है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, स्काई मार्शल और इंडियन इंटेलिजेंस ने आपस में कोऑर्डिनेट किया है। एमईए, एमएचए, एनआईए, इंडियन एम्बेसी यूएस में इन्होंने डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन दिखाया है। फॉर्मल प्रोसेस होता है एक्स्ट्राडिशन जब एक कंट्री एक इंडिविजुअल को सरेंडर कर देती है दूसरी कंट्री को, जहाँ पर जो है उसको पनिशमेंट दी जाती है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो उस कंट्री में उसने कमिट किया है। यूजुअली इसके लिए एक बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रीटी की ज़रूरत होती है। ऑफेंस जो है वो पनिशेबल होना चाहिए बोथ जुरिस्डिक्शंस में, तभी जो है ड्यूअल क्रिमिनलिटी के बाद ही जो है ये एक्स्ट्रेडिशन होता है। पॉलिटिकल ऑफेंसेस या लैक ऑफ गुड फेथ के केसेस में जो है वो एक्स्ट्रेडिशन नहीं किया जाता है। इंडिया का जो एक्स्ट्रेडिशन फ्रेमवर्क है वो 48 कंट्रीज़ के साथ है। एक्स्ट्रेडिशन अरेंजमेंट जो है जो नॉन बाइंडिंग होता है वो 12 कंट्रीज़ के साथ है। गवर्निंग एजेंसी इसकी एमईए होती है। और चैलेंजेस क्या होते हैं एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस में? लगभग देखें अगर हम राणा का ही केस, तो लगभग एक डेकेड से ज़्यादा लग गया। एक्स्ट्रेडिशन डिपेंड होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब डेविड हेडली जो है वो जो असली की कॉन्स्पिरेटर है उसको यूएस एक्स्ट्राडिट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने प्ली बार्गेनिंग का सहारा लिया और उससे जो है वो यूएस को जो है यूएस उसको इंडिया में एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकता और वहीं पर उसे 35 ईयर्स का सेंटेंस जो है वो सर्व करना पड़ेगा। तो एक्चुअली यूएस ने क्या देखा कि जो की कॉन्स्पिरेटर है जिसके पास कहा जाता है कि कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो यूएस नहीं चाहता कि इंडिया को पता लगे, तो उसे एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया है। जो एक लो कॉस्ट क्रिमिनल था जिसने सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था डेविड हेडली को, उसे जो है यूएस ने एक्स्ट्राडिट कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि हम इंडिया के साथ जो है वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और अपना टेररिज्म पर एक स्टैंड दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज्योतिबा फुले। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं ज्योतिबा फुले को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो ज्योतिबा फुले जो है एक ट्रेल ब्लेजिंग थिंकर, एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज किया अपनी फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन और जेंडर इक्वालिटी के लिए के थ्रू। तो एक मोर जस्ट और इक्वल सोसाइटी चाहते थे लाइफ लॉन्ग वो। उनकी जर्नी 1848 में शुरू हुई जब उन्होंने खुद कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन फेस किया एक ब्राह्मण फ्रेंड के वेडिंग पर, और उन्होंने इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल फॉर गर्ल्स भी उसी साल जो है वो थॉमस पेन के रैशनल थिंकर्स जो हैं या बाकी के मिशनरीज़ के साथ इनसे इंस्पायर होके गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। और 18 सच स्कूल्स उन्होंने जो है ओपन किए थे। सेवरल नाइट स्कूल्स भी ओपन किए थे वर्कर्स और अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज जो है वो एस्टैब्लिश किया, जो कि एक काउंटर फोर्स था अपर कास्ट डोमिनेटेड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स के अगेंस्ट। उनकी जो राइटिंग्स है जैसे गुलामगिरी, उसमें इक्वेट किया गया कंडीशन ऑफ इंडिया के लोअर कास्ट को अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स के साथ। फुले ने जो है चैम्पियन किया कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली पुअर। वो एडवोकेट करते थे स्कॉलरशिप्स और इंसेंटिव्स ताकि स्कूल अटेंडेंस इंश्योर हो सके। उनका विजन था कि एम्पावर किया जाए लोअर कास्ट को इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली, ताकि डिसमेंटल हो सके कास्ट बेस्ड बैरियर्स। तो वो क्रिटिकल थे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के, लेकिन फिर भी एक न्यूआंस्ड व्यू ऑफ फेथ रखते थे। वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को रिस्पेक्ट करते थे, और लेकिन उनका एक रैशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी थी। और उनका जो फाइनल वर्क था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक,
उसमें डॉगमा को रिजेक्ट किया गया, एक यूनिवर्सल इंक्लूसिव अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करने को कहा गया। अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी जो है फार्मर्स को देने की बात कही, कहा कि जो सोल्जर्स हैं उनको सिविल वर्क्स में भी एम्प्लॉय किया जाना चाहिए, और जो पेस्चर लैंड्स होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर उनको विलेजर्स को वापस देना चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म वो कहते थे कि क्रूशियल है पॉवर्टी की साइकिल को ब्रेक करने के लिए और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। शार्प क्रिटिक थे वो पॉलीगैमी के, और प्रोग्रेसिव स्टैंस दिखाते थे वुमेन्स राइट्स के ऊपर। तो ऑफ कोर्स वो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी आर्ग्यू करते थे। ओके, तो उनकी लेगेसी अभी भी जो है हमारे लिए डिस्कोर्स कास्ट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस पर इंडिया में जो है डिस्कोर्स को शेप करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम पोषण स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9.5% हाइक जो है मटेरियल कॉस्ट में अप्रूव कर दिया है पीएम पोषण स्कीम के अंडर, और एक एडिशनल सेंट्रल एक्सपेंडिचर जो है वो 954 करोड़ रुपीज़ का उसी की वजह से जो है गवर्नमेंट अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो पीएम पोषण स्कीम क्या है? मिड डे मील स्कीम को अब नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। इसमें 1 हॉट कुक्ड मील पर स्कूल पर डे टू 20 करोड़ चिल्ड्रन जो है उनको दी जाती है प्री प्राइमरी स्कूल्स में, और क्लासेस 1 से लेकर 8 तक लगभग 10.36 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का इम्प्रूव हो सके और इनरोलमेंट बढ़े, रिटेंशन रहे, अटेंडेंस स्कूल्स में बढ़े। ठीक है, खासकर जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनमें। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो अपने हिसाब से अपने बजट्स और ज़्यादा दे सकती हैं अगर वो मील्स जो हैं हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू की देना चाहती हैं। तो जो लेबर ब्यूरो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, वो डेटा सप्लाई करता है कि अब जो इन्फ्लेशन है वो पीएम पोषण मील बास्केट में जो है वो बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट फिर प्राइस या बजट अपना जो है स्कीम में बढ़ा देती है। तो पोषण अभियान जो है वो मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। अब इसमें फंडिंग पैटर्न कैसा होता है? सेंटर और स्टेट्स जो हैं वो जनरली 60-40 के रेशियो में जो है वो खर्चा इसमें बांटते हैं। 90-10 जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में होता है। 100% सेंट्रल फंडिंग जो है यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर के लिए होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ताइवान स्ट्रेट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं ताइवान स्ट्रेट में। ताइवान स्ट्रेट एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट और जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव बॉडी ऑफ वाटर है जो सेपरेट कर रहा है मेनलैंड चाइना को फ्रॉम आइलैंड ऑफ ताइवान, कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ। इस स्ट्रेट का नाम फॉर्मोसा रखा गया था पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स द्वारा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स भी है चाइना के लिए। ये वाइटल है ग्लोबल ट्रेड के लिए भी। 40% जो वर्ल्ड का कंटेनर शिप्स है वो यहीं से ही पास होते हैं एनुअली। और ताइवान स्ट्रेट जो है वो एक फोकल पॉइंट रहा है मिलिट्री और पॉलिटिकल टेंशंस में जब से चाइनीज़ सिविल वॉर हुई है 1949 में। ताइवान स्ट्रेट में क्राइसिस जो है वो 1954-55 में हुआ, फिर 58 में हुआ। तब जो है यूएस ने इंटरवेन करके एस्केलेशन रोक लिया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीजनियर्स डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक पब्लिक अलर्ट दिया है। लीजनियर्स डिसीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं सिडनी में। और लीजनियर्स डिसीज़ क्या होती है? एक सिवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया जो लीजनले बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसमें जो है मोस्ट कॉमन कॉजेज ये लीजनेला जो है वो 2 तरह की लंग डिसीज़ करता है। एक तो लीजनियर्स डिसीज़ जो सिवियर निमोनिया करती है, एक पॉन्टाइक फीवर जिसमें माइल्ड रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ, फीवर, हेडेक्स, मसल एक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और कुछ केसेस में तो इंडिविजुअल्स को कन्फ्यूजन, डायरिया और नोजिया भी हो जाता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? इन्हेलेशन हो जाए अगर कंटेमिनेटेड एरोसोल्स की कंटेमिनेटेड वाटर से। वैसे तो ये कंटेजियस नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन जो है ये एक तरह से स्प्रेड नहीं होता है। ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं BM-04 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने BM-04 मिसाइल जो है डिफेंस एग्जीबिशन हैदराबाद में रिसेंटली इनाग्रेट किया है, अनवील किया है। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया के फोकस को दिखा रहा है कन्वेंशनल काउंटर फोर्स कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने पर। तो BM-04 जो है इंडिया का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो DRDO ने बनाया है, और मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये अप टू 1500 किलोमीटर्स तक का कवर कर सकता है 500 kg कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ। कैनिस्टराइज्ड है तो ऑफ कोर्स इसकी जो है ड्यूरेशन लंबी रहती है।
और कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी है इसके, तो ये ऑफ कोर्स मैन्यूवर कर सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट और इवेड कर सकता है एनिमी मिसाइल डिफेंसेस को भी। रेगुलरली इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है आने वाले टाइम में न्यू वॉरहेड सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ। डीआरडीओ तो आपको पता है एक डेडिकेटेड है डेवलप करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ फॉर नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी, और 1958 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सनबर्ड। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइंस एंड टेक के लिए। सनबर्ड एक न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड रॉकेट बना रहा है। सनबर्ड एक एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्ड रॉकेट है जो पल्सर फ्यूजन एक ब्रिटिश स्टार्टअप बना रहा है ताकि इंटरप्लानिटरी ट्रैवल जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो सके। सनबर्ड जो है वो लगभग 8,05,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रीच कर सकता है, जो कि पार्कर सोलर प्रोब से भी कई ज़्यादा है। तो ये फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस टेक्नोलॉजी को अगर ये सक्सेसफुल रही तो हम प्लूटो में सिर्फ 4 साल के अंदर पहुंच पाएंगे, और इससे जो ट्रैवल टाइम है वो मार्स का वो लगभग हाफ से कम हो जाएगा। तो ये रेवोल्यूशनाइज करेगा इंटरप्लानिटरी ट्रैवल को और ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा ट्रैवल टाइम टू डिस्टेंट प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड प्लूटो। तो इसका ऑर्बिटल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो 2027 में होने वाला है, जो एक मेजर माइलस्टोन होगा अगर हम जो है स्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में अगर हम इसे अचीव कर पाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? बेसिकली एक एनर्जी जनरेशन प्रोसेस होता है जो स्टार्स में भी आपको देखने को मिलता है। फ्यूजन में क्या होता है, जो दो एटम्स हैं वो मिलके एक एटम बन जाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फिजन में इसका उल्टा होता है कि एक एटम जो है वो टूट कर दो एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो फ्यूजन जो है वो ज़्यादा क्लीन होता है, ज़्यादा एनर्जी हाई एनर्जी आउटपुट होता है इसमें, और लोअर रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। अब दो तरह के कंसेप्ट होते हैं न्यूक्लियर प्रोपल्शन में। एक होता है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, जिसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करके आप लिक्विड हाइड्रोजन को हीट करते हो और फिर वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होके जो है वो नोजल्स के थ्रू निकल के थ्रस्ट को जनरेट करती है, तो इससे बहुत हाई स्पीड आप अचीव कर सकते हो। और जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है उसमें क्या करते हो कि हीट जो न्यूक्लियर रिएक्टर की है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, फिर वो आयन थ्रस्टर्स को पावर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है ओवर लॉन्गर ड्यूरेशंस। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन जो है वो ज़्यादा आपको स्पीड या वेलोसिटी दे सकती है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is extradition of Tahavvur Rana. This topic is important for your international relations. So more than 16 years after the 2008 Mumbai terror attacks, the key conspirator Tahavvur Rana has been extradited to India from the US. His arrival marks a major milestone in India's counter-terrorism efforts, and it shows the efficacy of sustained diplomatic, legal, and intelligence cooperation between India and US. So we all know the unfortunate day of 26/11 when 166 people were killed, 238 were injured. So 10 Pakistani terrorists affiliated with LET attacked India. This infiltration occurred through sea route from Pakistan. And who is Tahavvur Rana? He was a Pakistani-born citizen, Canadian citizen, and he was former officer in Pakistani Army Medical Corps. He was close associate of David Coleman Headley, who was the key LAT scout. So he was arrested. Rana was arrested in Chicago, and he was facilitating planning and coordination of attacks. So he appealed in the US judicial system against his extradition to India, but US magistrate court approved his extradition, and even US Supreme Court denied him relief. So he was, of course, extradited to India based upon the India-US extradition treaty, in which US Department of Justice, Indian Intelligence, Sky Marshals, MEA, MHA, NIA, Indian Embassy in the US, they all cooperated for this extradition. What is extradition? It's a formal process where one country surrenders an individual to another country for prosecution or punishment. It usually requires a bilateral or multilateral treaty, and offense must be punishable in both jurisdictions if only if dual criminality is established, only then extradition can happen. But for political offenses, extradition does not happen. So extradition treaties India has with about 48 countries, but we also have extradition arrangements which are non-binding with 12 more countries. And of course, MEA is the governing agency for the same. So Rana's case took over a decade to conclude. Extradition therefore depends on diplomatic relations also. It does not mean that if you have an extradition treaty then the other party or the other country is bound to give you that particular person. So it depends upon the diplomatic relations also. Like for example, we have extradition treaty with UK,
but they are not giving us the Nirav Modi or other Vijay Mallya or other criminals who have absconded to that country. So uh, David Headley is also being not being extradited to India because um several news sources have confirmed that David Headley was a double agent. He also was working for Drug Enforcement Agency of US in 1990s, and there are speculations that he holds some key information regarding the fact that US had prior information about Mumbai attacks, but it failed to act timely upon it. So US does not want India to know about it, or it does not. It wants to save its face regarding the same, and that's why he was advised. David Headley was advised to go for plea bargain so that the US would become bound to not extradite him to India. So he would be serving his 35-year sentence. He is already serving actually his 35-year sentence in the US only. So Thavur Rana, who just provided logistical support to Headley, was uh, was a, a, was expendable for the US so as to increase the or so as to win the trust of India, while avoiding the criticism that why US is not extraditing David Headley. Okay. So the next topic is Jyotiba Phule. This topic is important for your art and culture or history section. PM Modi has paid tributes to Jyotiba Phule on his birth anniversary. So he was a trailblazing thinker, educator, and social reformer who revolutionized the 19th century Indian society through his fight against caste oppression and gender inequality. His lifelong mission was to build a more just and equal society. His transformative journey began in 1848 after facing caste based humiliation at a Brahmin friend's wedding. He founded India's first school for girls that same year. By the age of 24, he had opened 18 such schools and several night schools for workers and underprivileged children. In 1873, he founded the Satya Shodhak Samaj also, which served as a counterforce for upper caste dominated reformist movements. His writings, including the influential Ghulamgiri, equated the condition of India's lower caste with that of the African American slaves. He championed compulsory primary education for all, especially the poor. In a statement to Education Commission, he advocated scholarships and incentives to ensure school attendance, particularly for rural children who were often kept away to assist with farming. So his vision was to empower the lower castes economically and intellectually, so as to dismantle the caste-based barriers also. He was critical of religious orthodoxy and he maintained a nuanced view of faith. He respected Christianity and Islam for their emphasis on equality, but he leaned towards rationalist and humanist philosophy also. His final work, that is Sarvajanik Satya Dharma Pustak, rejected dogma and called for a universal, inclusive approach to spirituality, questioning the sanctity of caste based divisions. Uh, in Shet Karyanche Asud, he advocated for administrative support to farmers also. And he proposed innovative solutions like employing soldiers in civil works, such as building small dams and bunds. So he also advocated for releasing pasture lands from forest departments back to villagers. And he believed that agricultural reform was crucial to break the poverty cycle and ensure food security. He was a sharp critic of polygamy also, which showed his progressive view on women's rights. So basically, he argued for gender equality. His legacy continues to shape the discourse around caste, education, and social justice in modern India. So the next topic is PM Poshan scheme. This topic is important for your governance section and also your social issues. Government of India has approved a 9.5% hike in material cost under the PM Poshan scheme, resulting in an additional central expenditure of 954 crore rupees for the next financial year. So PM Poshan scheme, we all know that it was formerly known as midday meal scheme. It's a centrally sponsored scheme implemented by Ministry of Education. It aims to provide one hot cooked meal per school day to 20 crore children studying in Bal Vatikas classes 1 to 8 across 10.36 lakh government and government aided schools. The aim is to enhance nutritional status of school going children, improve enrollment, retention, and attendance in school, especially among the disadvantaged children. So
States and union territories can also contribute more from their budget to provide meals with higher nutritional value. Labor Bureau under the Ministry of Labor supplies data on inflation for the items in the PM Poshan meal basket, and PM Poshan Abhiyan is managed by the Ministry of Women and Child Development. So the funding pattern is as follows: 60-40 between center and states with legislatures, 90-10 for the northeastern and Himalayan states, 100% central funding for UTs without legislature. Okay. So the next topic is Taiwan Strait. This topic is important for your international relations. So China has launched aggressive military drills in Taiwan Strait. So this Taiwan Strait is a strategically significant and geopolitically sensitive body of water separating mainland China from the island of Taiwan. So it connects the South China Sea to the East China Sea. It was named Formosa by Portuguese navigators, and this strait is also one of the most important fishing grounds in China. And Taiwan Strait is vital for global trade, with nearly 40% of the world's container ships passing through it annually. Taiwan Strait has also been a focal point of military and political tension since the conclusion of the Chinese Civil War in 1949. Taiwan Strait crisis have happened in the 1950s, but when the PRC conducted artillery bombardments of Taiwan-held islands, but it led U.S. intervention, which deterred further escalation. So the next topic is Legionnaire's disease. This topic is important for your social issues. So health authorities in the New South Wales, Australia, have issued a public alert following a spike in Legionnaire's disease cases in Sydney. So this is a severe form of pneumonia caused by Legionella bacteria, commonly found in freshwater environments like lakes or streams, but it can also thrive in man-made water systems. Legionella most commonly causes one of the two lung diseases. Legionnaire's disease, it is a type of severe pneumonia. Pontic fever, which is a mild respiratory disease, and the symptoms include cough, fever, headache, muscle ache, shortness of breath, and in some cases individuals may also experience confusion, diarrhea, or nausea. The most common form of transmission of Legionella is inhalation of contaminated aerosols from contaminated water. It is not contagious, meaning it is not spread from person to person. Treatment exists, but there is no vaccine currently available for this disease. So the next topic is BM-04 missile. This topic is important for your security section. So India has unveiled the BM-04 missile at Defense Exhibition in Hyderabad. This next generation short-range ballistic missile reflects India's focus on enhancing its conventional counter-force capabilities. So it is India's latest short-range ballistic missile developed by DRDO. So this missile has a two-stage solid fuel propulsion system, and it can engage targets located at a maximum distance of up to 1500 kilometers with a 500 kg conventional warhead. It is of course canisterized also. It incorporates a common hypersonic glide body which enables it to maneuver during flight and evade enemy missile defenses also. It can be regularly upgraded with new warhead sensors and propulsion systems as the threat matrix evolves. So we all know DRDO is the premier military research agency dedicated to developing advanced technologies for national defense and security, and was established in 1958. So the next topic is Sunbird. This topic is important for your science and tech section. Sunbird is a nuclear fusion powered rocket which is being developed by Pulsar Fusion, a British startup, to revolutionize interplanetary travel. Sunbird could potentially reach speeds of up to 8,05,000 km per hour, which is faster than the Parker Solar Probe, currently the fastest human-made object. And this technology, if successful, could also enable missions to Pluto in just 4 years and also cut travel time to Mars by nearly half. It also aims to revolutionize interplanetary travel by drastically reducing travel time to distant planets like Mars and Pluto. An orbital demonstration is scheduled for 2027, which would be a major milestone if successful in space propulsion technology. What is nuclear fusion? So nuclear fusion is basically when two atoms fuse together to become one, and the energy released during that process is very high, and this is the same nuclear fusion that powers the stars. So in fission, what happens is that one atom gets broken into two atoms. So unlike fission, fusion is cleaner and offers higher energy output with lower radioactive waste.
So there are two main concepts in nuclear propulsion. First is the nuclear thermal propulsion, in which a nuclear reactor is used to heat liquid hydrogen, and then this hydrogen turns into plasma, which is expelled through nozzles to generate thrust. That's why it offers higher exhaustive velocity and can double or triple payload capacity compared to chemical rockets. The nuclear electric propulsion converts heat from a nuclear reactor into electrical energy, so it then powers ion thrusters, which slowly build high speeds over long durations. So as compared to NTPs generates exhaustive thrust at a low time. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.